Good morning, students. Today's subject is grammar, and today we are going to understand kinds of sentences. Okay, we see different words in the variety of way to make sentences, to ask questions, to give orders, and to express our feelings. यानी तरह तरह के सेंटेंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम वो सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है सेंटेंस है या सादा सिंपल सेंटेंस है या कोई सेंटेंस जो जिसमें आपका फीलिंग एक्सप्रेस किया गया है. There are 4 types of sentences, as you know. I know you have learned this topic earlier in your last section, that was in 6th standard. So today we will be revising this portion again. So let's see what it is. See, there are sentences given over here. You walked fast. Did you walk fast? Walk fast. How fast you walked. ये तरह तरह के 4 तरह के सेंटेंस आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं. The first sentence, this type of sentence is called as assertive sentences. That is, जो सेंटेंस का सिंपल है, the statements with ends with full stop is called as an assertive sentences. Sentence to ask about something, this is question. अगर कोई सेंटेंस आपको सवाल पूछ रहा है, you are expecting answer from that, then it is a and it the sentence ends with the question mark. तो ये this sentence is a interrogative type of sentence. Third sentence tells somebody to do something. This type of sentence is called as command. See here, walk fast. यानी इट इज कमांडिंग यू टू वॉक फास्ट. मतलब आपको कुछ करने को बोला जा रहा है, तो दैट इज ए कमांडिंग टाइप ऑफ सेंटेंस. दैट इज कॉल्ड एज एन imperative sentences or a command sentence. Now fourth is the exclamatory sentence. यहाँ पे आप exclamation का mark देख सकते हैं very well. See, the sentence which ends with the exclamation mark is called to be, the sentence is called to be an exclamatory sentence. See here, this kind of sentence is called an exclamation, and exclamation ends with the exclamation mark. We can say that there are mainly 4 types of sentence. That is, as I said you earlier, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. See here, some of the example I have given you. What a great idea! There is a exclamation mark. Over here, that sentence tells you that this sentence is an exclamatory sentence. Why are you running fast? See, the sentence ends with the question mark, and that shows that it is an interrogative sentence. Get out. How it sounds like जैसे आपको किसी ने ऑर्डर दिया है. That type of sentence is called to be a imperative sentences. Now fourth sentence is Jack plays football very well. Now this sentence end with the full stop and it's a plain sentence. यहाँ पे कोई command या question mark nothing is there. Then this sentence is said to be an assertive sentence. See, assertive sentence always end with the full stop. As I said earlier, the sentence begins with the subject. Subject से start होता है sentence. यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं. See over it. The fox is a cunning animal. The air is not a cunning animal. अभी इस assertive sentence में भी 2 तरह के sentences होते हैं. That is affirmative and negative. The sentence which does not contain negative word is called to be an affirmative. और जिस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नॉट, नो, दैट सेंटेंस इज ए नेगेटिव सेंटेंसेस. See here, some of the examples are given. I said the assertive sentence start with the subject. He is a student. Professor Das cancelled our class yesterday. This is some of the examples given for the assertive sentences. Now we will proceed for the interrogative sentences. Interrogative sentences are of 2 types. Those beginning with the helping verbs. Helping verbs के बारे में आपने सुना होगा. Is, are, am. ये वर्ड्स क्या है? हेल्पिंग वर्ड्स है.
If the word is sentence is starting with the are you going, means this sentence starts with the helping verb that is are and ends with the question mark, then this is an interrogative sentence using of the helping verbs. Next is the WH क्वेश्चन वर्ड्स. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं WH जहां पे स्टार्ट किया जाता है. Why are you going? See, this sentence start with the why, WH. So these are the two types of interrogative sentences. See, here some examples are given. Are you going? So this is the interrogative sentence, but it is of the first type, that is using the helping verb. ये helping verb लेके start किया गया है sentence. Are you going? Do you love flowers? Have you been to Dubai? Okay, these are some of the examples. Now we'll proceed further for the third type of questions statement, that is imperative sentences. Okay, imperative sentence express commands, requests, piece of advice and proposals. मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस जब होता है जहाँ उसमें हमें लगता है कि कोई हमें कमांड दे रहा है, या कभी कभी रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर, कमांड गो एंड सिट देयर, ये कमांडिंग है. एडवाइस, यू शुड टेक ए ग्लास ऑफ, यू शुड ड्रिंक अ लीटर ऑफ वाटर डेली, तो ये क्या है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है. तो दिस आर द इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस. हियर आर सम ऑफ द सेंटेंसेस सी ओवर हियर. डू इट राइट नाउ एंड हियर, ये तो कमांड है, आपको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है. फिर दूसरा है नेवर डू इट अगेन, ये आपको एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है, यू कैन टेक इट एज इट इज. गिव समथिंग टू ईट प्लीज, नाउ सी गिव मी समथिंग टू ईट, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है. डू नॉट किल मी योर मैजेस्टी, दिस इज ऑल्सो ए रिक्वेस्ट. तो ये इम्पेरेटिव के तरह तरह के टाइप से. सी ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, नेवर टेल अ लाई, दिस इज ए एडवाइस. लेट अस गो बोटिंग इन द रिवर, दैट इज अ प्रपोजल, मतलब हम लोग पूछ रहे हैं हम लोग क्या जाएंगे क्या, दैट इज अ प्रपोजल पुट फॉरवर्ड. let not the thief run away. So these are the examples for the imperative sentences. Now we'll proceed with the last part, that is the exclamatory sentences. Exclamatory sentence, you know it very well that the sentence ends with the exclamation mark and it shows your feelings, strong feelings दिखाया जाता है. कहाँ पे आपको अफसोस हो रहा है, किसी चीज का खुशी हो रही है, या किसी चीज को देख के आपको शॉक लग रहा है, तो that type of sentence shows that you can say it is as a exclamatory sentences. Okay, see over here some examples are given. Exclamatory sentence alas, hooray, ha, etc. Okay, alas the man is dead, यहाँ पे आपको अफसोस हो रहा है, alas बोलते हैं हम लोग, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क है और हमें अफसोस हो रहा है कि वो इंसान मर चुका है. Hooray, we have won the match, मतलब हमें खुशी हो रही है. जब आप किसी चीज को हासिल करते तो खुशी होती है, तो आप चिल्लाते हो खुशी से, दैट इज hooray. उश, द मैन इज स्लीप, मतलब यहाँ पे आप लोग ये करें, आवाज मत करो, शोर मत करो. ओके, दिस इज द टाइप ऑफ सेंटेंसेस what we see in the exclamatory sentences. Okay, so you have learned about the 4 types of sentences. I hope you have understood what it is. Thank you.